What are the 4 R's? Responsibility, Yes. renewal, But renewal के पहले क्या होता है? Renewal के पहले क्या होता है? last Something happens में before that. renewal, उससे पहले What are the 4 R's? Yes, Arvinder ji. Remorse, yes. The remorse के बाद when you feel that Restoration. yes, restoration and renewal. Absolutely, yes. So Bua ji, we are good to go. So Bua ji, we'll start the session today. So each time a woman stand up for herself without knowing it possibility, without claiming it, she stand ups for all women. As rightly someone said, a woman is a full circle. Within her is the power to create, nurture, and transform. So, as I think you all got a hint that today, this month, March, we all are going to celebrate woman empowerment, but our special Vindri Kaur, a spiritual healer, she is going to enlighten not only about women, but more than that, that is human empowerment. Over to you, Vindri Kaur ji. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. Good evening to you all. Good morning to the overseas and Ram Ram. Now today is a very important, because after doing those 4 days and just inculcating all those beautiful virtues inside us, hamare man ke andar is actually that is going to empower us. So those 4 days were very, very important for us. Now today we're going to come up to the human empowerment. Now, before I go to the human empowerment, I have to let you know about the woman empowerment. Very, very important. Because this tariqe se sansar chal raha hai, the way women were being treated, how women never even realized the importance of the power that the women were having. So, पहले पुराने time में क्या था कि girls were told no education, and what they were told कि भाई कल तुम लोग की शादी होनी है, कल तुम लोगों ने कोई बातें नहीं करनी है, घर को संभालना है, तुम लोगों ने घास से तुम्हारी अर्थी निकलेगी. So, there were a lot of pressure on the girls, when they are going to get married. So, from the very beginning, their minds were tuned. Their minds were tuned that this is how they have to live their life. They were never told the beauty and the power of a woman. This is what happened. This was of the olden days, which is still carrying on today. It is still carrying on. We will not say it is not. It is still carrying on today. Now, whatever was happening, the ladies, the women were fighting that we are now shoulder to shoulder with the men. Shoulder to shoulder with the men. Why? A lot of violence going on. And women were treated like doormats in the house. No education. Girls were not given proper food. And there were lots of myths and a lot of belief systems imposed on the woman. And there were also, sacrificing their lives when the husbands die. So all these belief systems were being carried on. Then the time came in the 20th century when the woman wanted that they have to have the woman empowerment. Now, what was that actually? Sorry to say, today all my sisters, my daughters, my grandchildren are sitting on this platform. But I'm going to break a very big myth for you. Please be very vigilant. Please, I cannot draw. Men are here. Men are here. And where were the women? Women are here. They are the Janani. They are the creator of human body. A human is born through this human, a woman. That is the power of a woman. And they say the pain that a mother a woman goes through to deliver, you cannot even imagine. That is why she was called the Mother Earth. What is Mother Earth? She carries all the burdens of all the human beings and all the species on the land. This is the power of a woman. And when a woman gives birth to a child, it is said scientifically that the mother's blood turns into milk.
So you can imagine that love, the compassion of a woman that turns the blood into milk. And she is of a woman with so much of power who can bring up a full family. So the woman was here, the man was here. But the misconception was this, that the woman said that I want to be shoulder to man. This is called woman empowerment. So they brought their power down. Can you see me? They brought their power down. उनको ऊंचा लेके जाने की जगह they brought their power down. They thought coming to a man's level, that means we are very strong, we have empowered ourselves. How? By educating ourselves. Eating what they eat. Doing all the jobs that they do. And slowly, what happened? They came to the level of the man. Maybe in the workplace, maybe in the education phase, professional, they must have come. But very sorry to say, egoism risen in them. It rose in them. That they say we are equal to man, identity. Or galti kahan se shuru hui? I'm making this a little bit clearer to people because it may hurt us people. So the mother, we told, education must be given to the children. All the girls also must be given education. So they started giving education to the girls also. So when the girls are getting married, so what do the mothers say? All the women, what do they say to the children? Beti, पढ़ लो, कल तुमने ससुराल जाना है, पढ़ जाओगे, कुछ न कुछ प्रोफेशनल लाइन ले जाओगे, कल पता नहीं क्या हालात बनेंगे तुम्हारे, कल तुम्हारे पास कोई जॉब तो होगी, कल तुम्हारी आइडेंटिटी तो होगी. So the girls are made to work with a very different concept. Their intents were very different. So when the girls got educated, they came into the professional line. When they got married, and then ego was there, that we are in level with the men. अगर मैंने 50% काम किया तो 50% तुम भी काम करो. ठीक है, it is very good to share the work. But with this type of thing that I'm also working, you are also working, so 50-50 has to be because I'm in level with you. I am being empowered. So what happened? Many breaks up have happened. A lot of divorces have taken places. Why? The women think that we are something. So the mothers told me, then what should we do? Shouldn't we then we should not give them education? I said, no, this is the art of education where you have to educate your children. Girls have to be educated. But galtiyan kahan ho gayi? When we had to educate the girls, we forgot to give them the education of spirituality. हमने वो जो EQ था ना, वो हमने overlook कर दिया. How to strengthen the girls, जो मन को strengthen करना था, उसको हम भूल गए. हम spirituality दे ही नहीं. हमने जब दी नहीं, इसी करके उनके अंदर इतना ego आ गया, and these problems. I'm not saying every, but many, because in the Supreme Court it is said that 58% of the divorces are because of the woman's ego. It's a very sad. So what happened? ये गलती एक मिक्स होने की वजह से एक हमारे लोगों के एक वहम बन के कि हमने empowerment करना है. Now what was actually woman empowerment? Woman is okay. Empowerment means कि हमने मन को तगड़ा करना है. मन को तगड़ा करने के लिए हमको क्या चाहिए था? EQ. Our emotions, we are supposed to have positive emotion, good lovely thoughts, where we can handle every situations. We can handle ourselves, where we can learn to love ourselves. Where we can love ourselves, we can love everyone. Then we can handle our own families, we can handle all the situations in life. This was empowerment. So हम लोगों ने वो empowerment नहीं की. So now अगर हम कहते हैं कि आजकल के टाइम में lot of awareness is coming and we bring up a lot of topic because this अगले month जो है ना is a month of women empowerment. So there are a lot of programs going over all over the world, women empowerment. But we have to be very careful. We have to be very careful to understand women empowerment. Because there are many questions arise that don't they, कहते ना वो लोग इसका नजायज फायदा तो नहीं उठा रहे कि हम लोगों ने अभी इस चीज को ज्वाइन कर लिया है, हम empowerment हो गए तो कल हम जो मर्जी कह सकते. No. Empowerment means that you become such a beautiful soul that you can handle your husband, you can handle your in-laws, you can handle the children, you can handle your friends, you can handle everyone beautifully.
This is the empowerment. At the same time, you will not take any nonsense. You will not be taken as a doormat. But first you have to empower yourself. You have to learn to love yourself. So to learn to love yourself and all, you must have an EQ of a very high rate. हमारी EQ क्या है? Nothing. Ego. We do not have the patience. We don't have the tolerance. Or EQ is very low for those people who are being treated as doormats. So it is both the way. We have to learn to empower ourselves so that we do not have the egoism or we do not behave like doormats of the house. So this is called the woman empowerment. So you will see that nowadays awareness is definitely coming up. There's definitely an awareness. जो पुराने के टाइम का था, जो सोच विचार हम लोग करते थे, हमारे माँ बाप लोग करते थे, in every way, now the time is gone. Now it is not those days now. So we are empowering the woman. Now what are we doing? आजकल हम लोग क्या कहते हैं, माँ बाप को कहते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, please do not make your children your parasites. Mothers have to be strong. You have a life to lead in front. बच्चों के मुंह के अंदर माँ बाप तो वैसे ही एकदम, we get drained off with them. So we are empowering. Give space to the children and take space. Let them grow and you grow. So these are the way of how to empower. The 4 days, that is how we are empowering ourselves. Now, you will see also in history. In history, you will see that according to the Sikh religion, you will see Mata Sundari, you will see Kevi. There are many of these warriors who fought the battles. Mata Kivi was what? She made the langar. Till today, you see the langar pratha was started by her. So what happened? These are the women at that time, they were so well, so empowered. And how were they empowered? Because their EQ was beautiful. They were spiritually enlightened. Their body was getting beautiful food. They were getting excellent knowledge. They were getting that excellent spiritual knowledge. That is why they were giving all opportunities were given to them. They were able to do all type of works. And if you see today, अगर आप आजकल के टाइम को देखोगे तो कहते हैं कि there's a story of Ahelia Bai Holkar who was a warrior. Who was a warrior? Mata Gujri, Mata Kivi, and you see Mata Sahib Kaur, what? They were all warriors. They were women empowerment. Not only physically, they were empowered. Unka man jo tha, that also was empowered. So now we have to understand empowerment is how important it is. But at the same time, you will see that empowering people have to understand it is just not a woman being empowered, it is also a man being empowered. Aajkal ke time pe we have to empower the men also. I'm sorry to say, we have to empower the men also. When you go into these cases in the court and all, you'll be dazed to see all the cases over there. So we are one of them, it says in the Gita. I will like the sheets there just to read it. Boji, Manish can do the needful. Yeah, Manish can do this, yes. In Gita, what is written, you can just read the verse. Yes. So in English, if I read it, the humble sages, by virtue of true knowledge, see with a equal vision a learned man and gentle. Can you remove the cursor, please? And a learned and gentle Brahman, a cow, an elephant, a dog, and a dog eater means an outcast. So he sees everything with an equal vision. Yeah, Bhuaji? Yes. So now, see, this is written in the Gita. Something same is also written in the Guru Granth Sahib. All the holy books are talking about the same thing. Now you see this, there's a very big myth which I'm going to break in this. It is written Anand Karaj. It is written Anand Karaj. What do we say? Lama. They say Lama. Yes, Rimple, you can just remove this. Remove it from the screen. Now you say, we say Anand Karaj. Now you see that there is Anand Karaj. But हम लोग क्या कहते हैं? लामों पे जा रहे हैं. हम जी लामों पे जा रहे हैं. It is not a lama. It is Anand Karaj. Anand means bliss. This ceremony is called Anand Karaj, mean it is a bliss.
a ceremony of blissfulness. Now, what was actually the meaning of this? When a male and a female sits in front of the Guru Granth Sahib, please be very attentive. When a male and a female sits in front of the Guru Granth Sahib, the wordings of the Guru, the Bani is being read. Now, both the male and the female is hearing. They are hearing. They hear to all the four lamas. They hear to all the four lamas. In the four lamas, a message is given to the male and to the female. A message is given to the male and to the female that when we interpret the four lamas, it is actually telling them that you have to incult all the beautiful qualities of the oneness. You have to incult inside you, where? Us man ke andar. All the beautiful values, the virtues of the oneness inside you. So also it says to the male, incult all the virtues and values inside your man. Because according to the Guru Granth Sahib, it says that all the people on the universe, maybe it is a man, maybe it is a woman, maybe it is an old person, maybe it is a young person, बेशक वो बच्चा है, बेशक वो काला है, वो गोरा है, वो हिंदू है, मुसलमान, कोई भी, any person on the earth is named as Stri. Stri means woman. Is named as Stri. Now, physical body may be a male or maybe a female. But उसका जो मन है ना, उसको स्त्री बोला जाता है, woman. So what happens कि ये जो मन है, जो woman है, has to unite with the purush. It has to unite with the purush. वो पुरुष कौन है, वो प्रीतम हमारा कौन है, वो पति कौन है, वो oneness है. वो कहाँ है, वो हमारे अंदर ही है. So हम जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, हमारे सब के अंदर एक मन है. वो मन क्या है, एक औरत है, एक स्त्री है, एक वो को सुनती है, उसके सारे गुण जितने भी हैं, जितने भी वर्च्यूज हैं ऑफ दैट वननेस, वो अपने मन के अंदर धार लेती है, इनकल कर लेती है, abides with it. What happens when she collects all the virtues? Then that man, which is a woman, goes and unites with the Pritam, with the Pati, that oneness. So there is a union. So this is for everyone, beshak it is a woman or a man. Now, when we're sitting in front of the Guru Granth Sahib during the Lama, the male hears all this and he unites with the oneness, his Pritam. The female also hears all this and unites with the Pritam, that oneness. So what happened? There is a triangular form. Because here is the Guru Granth Sahib, here is the male and here is the female. So both of them unite with that oneness. And then when they unite with the oneness, then the physical husband and wife, they can unite. Then they can unite because they have united with that oneness. So वो कहते हैं कि जिन्होंने अपने oneness, अपने मूल के साथ, अपनी identity के साथ, अगर उन्होंने union पा लिया है, marriage will be a beautiful scenario for them. Because there will be complete unconditional love. There will be absolutely no judgment, no blame game. There will be always in gratitude. They will always take responsibility. They will have compassion. All why? Because they have already united with the oneness. So it forms a triangle. So that is why it is called Ananda Karaj, mean a ceremony of blissfulness. But sorry to say, we people don't understand. हम वहां बैठ जाते, लहंगे शंगे पहन के बैठ जाते हैं, हमको अपने ड्रीम होते कि आज हम अपने प्रीतम को मिलेंगे, अपने घर वाले को मिलेंगे, हम यहाँ जाए. We are in our own dreams and we don't even bother to hear what our guru is telling us. But that is why marriage has just become like a, mela type. हम जहाँ जाते हैं, वहां पे हमने सुना नहीं, समझा नहीं, पूरी जिंदगी नहीं समझा. इसी करके हमारी यूनियन, हमारे जो कंफर्ट लेवल, हमारी कंपैटिबिलिटी हमारे हस्बैंड वाइफ की नहीं होती. हम कल एडजस्टमेंट ही करते रह जाते हैं, हम लोग कॉम्प्रोमाइज ही करते रह जाते हैं लोग. Why? Because we have not understood what that Anand Karaj was, where we are supposed to see that oneness in everyone. जिस दिन हम लोगों ने हमारे अंदर उस एक को देख लिया, तो हमको सबके अंदर देखना आ जाएगा, पर हम लोग नहीं देखते हैं. That is why we say, now where does it go? It is
वुमेन एम्पावरमेंट और इट इज ह्यूमन एम्पावरमेंट. अगर हम उसको कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, तो वुमन तो सबके अंदर है. आज वुमन की सबकी होगी ना यूनियन विद द वननेस, क्योंकि वो मन तो वुमन है और उसके अपने पुरुष के साथ उसकी यूनियन हो गई. सो दैट मीन इट इज कॉल्ड व्हाट, वुमन एम्पावरमेंट. And in a long way, we can say man plus woman equals to human empowerment. We have to empower everyone. But I'm getting woman empowerment, and it's so much, because when I go on to other platforms, many doctors have told me, "Hey, Boji, you're talking about women. What about those people and all, ladies and all, who are just taking us for a ride also?" वो कहते हैं आजकल हम लोग भी बहुत तगड़े हैं. No, empowerment means gracefulness, happiness, loving, gratitude, caring, all these beautiful qualities. So जिन लोगों ने अपने आप को empower कर लिया, मतलब कि हम लोग हर सिचुएशन को हैंडल कर सकेंगे वेरी नाइसली, अनकंडीशनली हम कर सकेंगे. बेशक हमारे अंदर ह्यूमन एम्पावरमेंट होगा तो हम अपने हस्बैंड वाइफ के साथ भी बहुत अच्छी तरह से हम चल पाएंगे, अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे चल पाएंगे, हम लोग अपने सास ससुर के साथ बहुत अच्छे चल पाएंगे, हम दरानी जिठानियों भी बहुत अच्छा चल पाएंगे. क्यों? ह्यूमन एम्पावरमेंट. So this is one of the biggest myths that we people have created. So human empowerment, or if you want woman empowerment, is gracefulness, is loving, unconditional, is not taking that dhada. Aaj hum woman empowerment, no. Sorry, bache, it's not that. Break this myth. Break this myth. Hanji Manish, you like to add something? I think I've spoken a lot about the woman. No, no, Buaji has like thrown a beautiful light on like this is a big myth. Even I agree, being a man myself. So see, this is just a gender difference, man and woman. What is there? It's like a sperm and egg coming together. If some combination comes together, you become a man. Other combination becomes a woman. And it's been like a big myth that woman needs to be empowered because woman ही जननी है. Like आज man भी कहाँ woman के अंदर से ही आता है. Okay, so if I have come from a womb of my mother, I am a part of my mother only. So where does this term come from? Woman. This is out of a ego, I believe. This is out of the ego of a man or ego of certain civilizations where they felt that men are more superior to women, where exactly it's the opposite. Because जीवन जीने की शक्ति किसमें? Without a woman तो दुनिया आगे चलेगी नहीं. So yeah, it's like very important for us, for women especially, since so many women are there in this session, that we should drop this notion that we need to be empowered by men, that if men give us rights then only we will be empowered. भगवत गीता में कितना ब्यूटीफुल श्लोक था, be it a learned man, a brahman, a cow, a dog, a donkey, an elephant, or a dog eater, we all are equals. What does this mean? That we all are that one consciousness, that awareness जो हमने फर्स्ट सेशन में सीखा. कितना ब्यूटीफुली बुआ जी ने बताया that marriage is not just that लहंगा पहन के आ जाओ and डांस करें, गाना गाएं, खाना खाएं. That is not marriage. It's a beautiful union of two souls wherein आनंद करज. It's a beautiful meaning. मुझे भी आज पता चला the meaning. In fact, in Hindus also जो 7 कसमें देते हैं उसमें एक कसम ये होती है that we all, both will treat each other as equals. हालांकि कोई सुनता नहीं है वो अलग बात है, but just like the same in all the religions, that we all are equals. And this concept of human empowerment, I believe this is also a myth, that humans need to be empowered, because if we feel that we are all souls, if we have that self-awareness that I'm not this body, I'm not this mind, then this soul, this cannot be imperfect. This soul is already powered. It's just that there is so much of wrong conditioning. इतना कुछ बचपन से हमें सिखा दिया गया है about जब हम पैदा होते हैं तो right, we are sent to schools, we are compared with others. Somewhere within we lose our own uniqueness. हम अपना यूनिकनेस एक खो देते हैं एंड देन वी सफर ऑल अवर लाइव्स. हम दूसरे से कंपेयर करते हैं अपने आप को, अपने सिबलिंग्स से, अपने फ्रेंड्स से. जस्ट इमेजिन ना, हम अपने बच्चों को कितना बोलते हैं कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओ. हम उसको दूसरे से कंपेयर करते हैं. हाउ वुड द चाइल्ड फील इफ द चाइल्ड कम ऑन टेल्स यू, इफ द चाइल्ड टेल्स यू दैट आप मुकेश अंबानी से अपने आप को कंपेयर करो, हाउ वुड यू फील? दैट उसके पास ऐसी गाड़ी, आप भी ये गाड़ी लाओ, आपको कैसा लगेगा? ऑल द टाइम वी फील. So see, there is nothing called as empowerment or nothing called as perfection, because we all are somewhere imperfect and our imperfections make us unique. कहीं ना कहीं हमारे imperfection हमें unique बनाता है. आज देखिए ना, if you look at nature, is there any one mountain peak that is exactly symmetrical? कोई भी है mountain peak?
और इज देयर एनी वेव दैट इज सिमेट्रिकल कि एक ही तरह के वेव्स आते हैं? एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज लाइक as per they should be, but we have like formed an image that हमें ऐसा बनना है, we should be somewhere, हमें दूसरों की तरह बनना है. बहुत ही, can you throw some light on the uniqueness? Because मैंने आपका पास्ट में सुना, in my sessions I have heard about uniqueness, because this is, we have to understand that 8 billion people are there in this planet. 8 billion, 800 करोड़ लोग, 800 करोड़ डीएनए भी है. There are 8 billion DNAs and no two fingerprints are the same. Isn't this fantastic? Isn't this proof enough that we are unique? Isn't this proof enough that we are here to just express our own uniqueness? So important to, अगर ये बात हम समझ जाएंगे तो empowerment की बात कहीं आएगी ही नहीं. There is no nothing, because you are different. There is no other Manish Sangha in this world. There is no other Bhuaji in this world. Then whom are we comparing ourselves to? हमें किससे superior बनना है, किससे कौन हमारे inferior है? We all are equals, but we all are unique. अगर ये हम समझ जाएंगे ना, then all the problem is solved in this world. There is no comparison, no question of empowerment, no question of that I am above you, no question that you are below me. Such an important awareness that we should have, जो भगवत गीता में बोला गया है, जो सभी ग्रंथों में बोला गया है, I believe. Yeah, Bhuva ji, anything you want to share regarding this? So that is why we're making them alert to find out your own identity. पर हम जब पैदा हुए तो हम भूल चुके हैं. इसी करके कहते हैं हौमै, इसी करके कहते हैं हौमै. हौमै means you're being in the body conscious, duality, दूजा भाव. वो जो अंदर बैठा था वो तो मेरी आइडेंटिटी थी, मैं दूसरे के साथ लग पड़ी, शरीर के साथ लग पड़ी, हौमै शुरू हो गई, खेल शुरू हो गया. We forgot our own divinity, that power of us. We are that power that we can create. But we are not alert, we are not aware. पूरी जिंदगी निकाल दी, उसको ढूंढते निकाल दी. पर ये नहीं पता जब हमने अपनी आइडेंटिटी खोजने शुरू की, अपनी आइडेंटिटी तो हमको वो भी मिल गया, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी इज ओनली दैट. एंड सॉरी टू से, रोज पढ़ते एक ओंकार सतनाम करता, एवरी डे वी आर रीडिंग, but we are not still realizing we have the power in us. We don't need to be empowered. We are already whole. We are complete. But हम लोग ने लाइफ में ऐसे ऐसी चीजें, because being in the body into the wrong identity, हमने अपने अंदर में दीमक इकट्ठा कर लिया है, हॉलो इकट्ठा कर दिया है, और उसको विदाउट अंडरस्टैंडिंग प्यार मांग रहे हैं, जजमेंट मांग रहे हैं, बाहर से चीजें मांग रही हैं, जब सब कुछ मेरे अंदर ही है. So what happened? These classes just make us alert. You don't need to go anywhere. You have the power. You just have to have that little bit of the knowledge and just trigger it. Just trigger it. You just have to put the dialogue. बड़ी बात बच्चे कहते हैं जी हम वहां तक पहुंचे का, कुछ नहीं पहुंचना है. It's just a thought that goes there. I am the divinity power. I'm no more a victim. I can create, I can sustain, I can destroy. Today we are doing what? We are just creating a new world inside us. By empowering ourselves, what are we just creating? A beautiful world. When we are creating a beautiful world, we are destroying the old world inside. But the next, what we should do to be like warriors, please sustain the new world that you're creating inside. Then you become the Ikkonkar. Very simple. But we are so used to not running. चलो इस समागम में भागे, उस में कल शायद वहां से मिल जाएगा, यहाँ पे जो गाड़ी में अखीर हार के पूरा दिन थक जाते हैं, हम बड़ा काम करके आए हैं. क्या करके आए? हम उसको ढूंढने गए. Waste of time, money and energy. Everything is within you. You don't have to go anywhere. Know where you need to go. Search inside you. Power yourself. Power yourself. You have it. I think we have been doing for the last 6-7 months. Empower yourself. Because the power is already there. You just have to have an awareness, alertness of it. Nothing else. Yes. So, Bhuva ji, can I carry on from here a bit? Yes. This thing aware about uniqueness. See, first of all, we have to drop one notion. We have to drop one notion that we are incomplete. That हमें life में कुछ पाना है, हमें life में कुछ बनना है. Because this is all taught by society to us. Because we wait for some point in future that we will be happy.
And believe me, that time will never come in your life. If you are not happy with what you have today, if you don't have that feeling of completeness today, that feeling will never come in your life, because no amount of money will satisfy you, no amount of fame will satisfy you, no designation can satisfy you. Because we have been conditioned that we have to reach somewhere. एक गोल पोस्ट हो गया, you move your goal post, you move to next goal post. I want X amount, X मिल गया, I want a Y amount. मुझे इतना सैलरी चाहिए, इतना मिल गया, मुझे और प्रमोशन चाहिए. We are never content. We always have that feeling that there is something more to life, there is something more to me. So one very powerful affirmation everybody should do, जो मैं अपने सब students को कराता हूँ, it's a very powerful thing, that I am complete. You can write this in your book. Every morning, every evening, say to yourself, I मतलब not this body, not this mind, that soul awareness, that consciousness. जिसने ग्रुप में चैट में सही लिखा कि हम उस परमात्मा के अंश हैं, we are that, I am that, अहम ब्रह्मास्मि, I am Brahman, जो भगवत गीता का श्लोक था, I am Brahman. I am not someone separate from that. If I am complete, then where is the question? Where the question arises of to reach somewhere. आप में कोई कमी नहीं, हम सब खास हैं, हमें समझना बहुत जरूरी है that we all are unique, we are all special, that I am perfect. I मतलब not out of ego, but out of this understanding that I am this soul, I'm this soul consciousness, I'm this awareness. How can that be imperfect? जो उस परमात्मा का अंश है, how can that be imperfect? Such a beautiful thought. So I am complete, I am perfect. Last, very important, one more affirmation. I am the best. Again, why I am the best? Because आपके जैसा दुनिया में और कोई है ही नहीं. Okay, so there is only one Bhagwan Das ji in this world, one Tarvinder जो मुझे नाम सामने दिख रहे हैं, one रविंद्र नारंग, one अश्विन भाला भल्ला, one मनीष संगय, one वृंद्री क्रौर. कोई है ही नहीं. तो आपसे बेहतर कौन हो सकता है? ये तो बस हमने कंपैरिजन आपस में क्रिएट कर लिया कि इतना पैसा है तो वो सक्सेसफुल है. बिलीव मी, जिसके पास ज्यादा पैसा है ज्यादा दुखी है वो आज के दिन. उसको और डर रहता है कि उसको खो नहीं दे और हमसे आगे कोई नहीं बढ़ जाए. ओके, सो देर इज नो अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन मेक यू हैप्पी. दैट हैप्पीनेस, that sense of fulfillment, that sense of satisfaction, that sense of completeness, that sense of empowerment, it all starts, we go back to the first session जो हमने responsibility सीखा, awareness. So the buck starts at awareness, it ends at awareness. Everything in between are all concepts जो हमें समझना जरूरी है, that why that is important. But unless you understand this fact जो हमने first session में पहला सीखा, that you are not this body, you are not this mind. And every day say this to yourself, every day, because mind हमारा जो subconscious mind है, हमारे कण कण में जाना चाहिए, हमारे subconscious mind में जाना चाहिए. And जब ये हो जाएगा ना, when you feel that you are complete, you are perfect, believe me, there will be no fear. How beautiful life would be कि आपको कुछ fear नहीं है. If God takes away life from you tomorrow, you will have no sense of regret, because you understand that there is something more to this body, there is something more to this existence, that you are not here just to like feed your family, just take care of your family and just do your daily chores. There is something more to life. Because सबसे ज्यादा डर क्या होता है लोगों को? डर होता है अपनी जान का, अपना, like fear of death. It's the biggest fear that we have as human beings, and which is inevitable, because fear is no one can escape death. Then why should we fear that? कब fear होता है? Because we have this false identity of our body, and then we struggle our life. हम कोई अगर परिवार में किसी की डेथ हुई तो हम दुखी हो जाते हैं. If some illness कम, हम दुखी हो जाते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारे परिवार वालों का क्या होगा. This is all like unnecessary suffering that is going on in today's world. So much of depression, even a 10-year-old child is in depression. Teenagers में तो बहुत common हो गया. Like it's the biggest like pandemic. Depression is the biggest pandemic, and it is all because of this false understanding of our true self. तो ये सब आप करेंगे, what we learned in the last 5 sessions, what we learned, believe me, life will become very easy, because life is meant to be effortless. Life is not meant to be hard. Look at everything in nature. Look at a fish. Does a fish swim effortlessly, or does it take effort to swim? Obviously, it swims effortlessly. Look at birds. Does a bird fly or glide with effort or effortlessly? उसको सिखाना नहीं पड़ता है, अपने आप वो पैदा होता है, बड़ा होता है, अपने आप उड़ने लगता है. Look at sun. Does a sun take effort to shine? No, shines 24/7. कहीं ना कहीं किसी न किसी दुनिया के कोने में सनशाइन करता है. Look at moon. There is no effort. अपने आप पूर्णिमा आता है, अपने अमावस्या, न्यू मून, फुल मून अपने आप आता है. But then why the hell on only human beings are meant to suffer? जानवरों का कोई डिप्रेशन क्लिनिक नहीं होता है. इंसान को तो आजकल इतने साइकियाट्रिस्ट भर गए गली गली में. Like, why are we only suffering? We should question this. Why are we ill? Why are there so many hospitals around?
Why so many are people having diseases? Because it all originates in the mind. Everything, origin of everything is in your mind. We are like making hell of our own life by our own thoughts. So it's very important for us to understand that we are all unique and we are all empowered. Just we need to like do some polishing, do some, have some knowledge, come to the sessions of Buaji ka session mein aiye, and just start living life to the fullest, just start enjoying life. I'll just end with a beautiful quote which I show to my students. मैं आपको दिखाना चाहूंगा. Then Rimple, you can take over. It's a beautiful quote. You can take a photograph. So you can maybe look at the screen now. Yes. So be awesome and more. Like we are all awesome and we are all perfect in our own imperfections. Only perfect. हम सब Very परफेक्ट है, हम सब परफेक्ट है. वी आर ऑल ऑसम. हम ऑसम एकदम स्वैग से बोलने का. वी आर ऑसम, नॉट लाइक दब के बोलने का. व्हाई? हम बेस्ट है बिकॉज यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट. यस. सो व्हाट यू, रिंपल? Thank you, Buaji, and thank you, Manish. So today, as we all know, today is the 5th day of a series, and tomorrow is an open forum. So I would like to take a privilege to conclude the series with a very, very beautiful story made by our own counselor, Deepika Oberoi, Darshi Mulani, a young girl of 16 years, Sehaj Kaur, and myself, Rimple Kaur. So ये सबकी मेहनत है जो अभी आप सब देखने जा रहे हो. तो let's conclude the session. But before that, let me take you with the summarize of today series with a beautiful mind or more. Just glance once जो भुआ जी ने, जो मनीष ने हमें समझाया है कि women empowerment क्या है ना. We need to promote our own self-worth. We should have ability to determine our choices. We need to use these opportunities, tools जो हमें मिल रहे हैं, जो बुआ जी ने अभी हमें बताया. जो अभी आप महाराष्ट्र की जो वॉरियर अहिल्या बाई होलकर, जिसकी वीडियो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है, वो माता गुजरी, माता खीवी कौर, माता साहेब जी, जैसे गीता में से अभी मनीष ने वो पढ़ा था कोट, है ना. तो जहाँ बुआ जी ने हमें यहाँ पे अभी और बताया कि कैसे पहले टाइम पे कितनी रिस्ट्रिक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना पेशेंस होता था, राइट. एंड वी ऑल हैव सीन कि मदर अर्थ बोला जाता था, कैसे सबर संतोख होता था एक वुमेन के अंदर. बट आज की सेंचुरी में हम देख रहे हैं कि थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है. वुमेन्स आर डूइंग जॉब, ठीक है, उनको फ्रीडम भी दी गई है, रिस्पेक्ट भी दी गई है, बट समवेयर वी आर मिस यूजिंग. एंड आई टोटली एग्री विद बुआ जी कि जो उन्होंने हमें भी बताया कि वुमेन यहाँ है, मैन यहाँ है. वुमेन एक ऐसी है कि जो अपना घर भी देखती है, बच्चे भी देखती है, जॉब भी देखती है, ऑल राउंडर है. आई रिमेम्बर हमारे गुरुद्वारे में मनमोहन अंकल हमेशा ये बताते थे कि नहीं, मतलब सलूट है तुम लोग को कि बेस्ट. मतलब हम तो फैक्ट्रीज को देखते हैं, अपने बिजनेस को. वुमेन जो होम मेकर है वो सबको देखती है, पर हमने होम मेकर को दर्जा बहुत नीचे दिया है. अच्छा वो तो हाउस वाइफ है, वो क्या करती है, हम तो बिजनेस में जाते हैं, हम तो जॉब में जाते हैं. बट मेरे को इतना अच्छा लगा जब उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट ये दिया कि नहीं, होम मेकर्स यहाँ हैं जो सब कुछ देखते हैं. सो वी नीड टू पैट अवरसेल्फ, बट साइमल्टेनियसली हमारे अंदर ईगो नहीं आनी चाहिए कि वी आर लाइक सेम, मैं भी तो कमाती हूँ, मैं भी तो जॉब कर रही हूँ. नहीं, वो ईगो आती है तो जो बुआ जी ने समझा कि वो हमें गिरा देती है, हमारा EQ नीचे कर देती है. सो समवेयर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमें वो मिसयूज नहीं करना है, राइट. अपने अंदर वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं लेके आना है, बिकॉज मैरिज इज अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन. जैसे गीता में भी यही हमें समझाया गया है, राइट. और गुरु ग्रंथ साहब जी में बुआ जी ने बड़ा प्यारा बोला है. सो जो 4 जो हमारे फेरे होते हैं ना, उसमें सबसे पहला जो लेते हैं ना वननेस का, वो है अडजस्ट, डोंट प्रोटेस्ट, the meaning of the first fera. Second is don't break wall of respect, husband wife के बीच में भी और with the oneness. क्योंकि हमारी जो शादी हो रही है फिजिकली एक वुमन और मैन की हो रही है, बट एक्चुअली हमारी शादी वननेस से होनी, जो अंदर परमात्मा है हमारे अंदर, जो गॉड है, जो अल्लाह है, जिसको हम राम बोलते हैं, वाहिगुरु बोलते हैं, वो सब अंदर है. सो जब भी हम ये मैरिज करते हैं तो थर्ड में हमें ये कमिटमेंट दिया जाता है कि वी बोथ हैव टू लुक इन वन डायरेक्शन, सोच ऐसे. फोर्थ है डोंट स्पेंड मोर देन वंस अर्निंग.
ये है रिस्पेक्ट। ये अगर चारों प्रिंसिपल्स को हम रखते हैं, अपने पास रखते हैं, संभाल के यूज करते हैं, तो मैरिज इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जो हमें परमात्मा और कहते हैं ना आत्मा को जोड़ता है। जो बुआ जी ने बोला सारा संसार, हम एक फीमेल है, स्त्री रूप है, पर खसम परमात्मा एक है, तभी तो ये यूनियन विद वननेस होगा हमारा। फिर अपने आप एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी, ये ग्रोथ होगी। एडजस्टमेंट इज अ पॉजिटिव एनर्जी, compromise इज अ नेगेटिव एनर्जी, इट लीड्स टू डिवोर्स ऑफ ईगो। मैन कैनॉट लिव इन एन आइसोलेशन, जिसकी वजह से मेल और फीमेल को साथ चल के ही एम्पावरमेंट होगा। आई एम सॉरी, हम लोग कह रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट ये साल है, बट वुमेन के साथ मैन एम्पावरमेंट होगा तो ह्यूमन एम्पावरमेंट होगा। So we all have to lead to human empowerment. But yes, sitting over here, most of the women, we have to get inspired by one of the great warrior, Ahilyabai Holkar. So let's all watch a small reels of her. I hope, Bhoji, you can hear it. Mhm. Ek second. Are we all ready? Yes. So here we come with our beautiful. सबने आर्टिकल 370 देखी है, right? So again we'll go very very slowly, chapter by chapter. It's a very small 5 minutes video. So let's all start. आज हम आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिसके लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं मैंने। ईश्वर का रचा एक आकार हो तुम, जिसने हिस्ट्री को बदल एक नयापन दिया, वो मूर्तिकार हो तुम हो गुणों की खान, अपनी ही नहीं पूरी नारी जाति को भी नई दी एक पहचान। लोगों ने काम तो कई किए हैं, लोगों ने काम तो कई किए हैं, पर तुम्हारे जैसे कम ही हुए हैं। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, यकीन नहीं आता तो देख लो पन्ने खोलकर, वो कोई और नहीं थी, वो थी महारानी अहिल्याबाई होलकर। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन कि ये कोई और नहीं है, वो है हमारी अहिल्याबाई होलकर, जो महाराष्ट्र में रहते हैं, उन्होंने सुना होगा। नाउ लेट्स लिसन टू चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नंबर 1, अर्ली चाइल्डहुड। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को चौंडी नामक गांव, नाउ अहमदनगर, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिताजी का नाम मानवजी शिंदे था, जो उस समय के पाटिल थे, और सुशीला शिंदे उनकी माता का नाम था। अहिल्या में बहुत सारी क्वालिटीज बचपन से कूट कूट कर भरी थी। वो एक एनिमल लवर होने के साथ साथ कंपैशन, एम्पैथी, असर्टिवनेस, ऐसी कुछ क्वालिटीज उसको विरासत में उसके पिताजी से मिली थी। उसके पिताजी का उसको हमेशा सपोर्ट रहता था। फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं मिली थी, लेकिन पिताजी ने उसको घर पर ही जितना हो सकता था एजुकेशन प्रोवाइड की थी। माता सुशीला शिंदे सोसाइटी के डर से बहुत ज्यादा उसका साथ नहीं दे पाती थी। ऐसा कहा जाता है कि मल्हार राव होलकर, जो मालवा के सूबेदार थे, एक बार अपनी टुकड़ी के साथ पुणे की ओर जा रहे थे, जिसमें गंगोबा तात्या, उनके मिनिस्टर भी शामिल थे। 8 साल की नन्ही अहिल्या वहां मंदिर में साफ सफाई का काम कर रही थी। घोड़ों के टापों की आवाज सुनकर उसकी सभी सहेलियां वहां से चली गई, पर नन्ही अहिल्या बिना डरे शिवलिंग के साथ वहीं खड़ी रही। अहिल्या की निडरता देखकर मल्हार राव इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे खंडेराव से अहिल्या की शादी करवाने का फैसला ले लिया। तो जैसे अभी बुआ जी ने हमें बताया, निर्भय, राइट, निडर। सो हम देख सकते हैं कैसे वो निडर होके उसने अपनी जिंदगी बचपन से ही व्यतीत करनी शुरू की। सो लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 2. लाइफ। अहिल्याबाई का विवाह खांडेराव होलकर से हुआ। गौतमाबाई, जो मल्हार राव की वाइफ और खांडेराव होलकर की माता थी, इस विवाह से बिल्कुल खुश नहीं थी। गंगोबा तात्या, जो मालवा के मिनिस्टर थे, वो भी इस रिश्ते से सहमत नहीं थे, और ना ही खांडेराव होलकर खुश थे। और इस नाराजगी के चलते उनके रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत कड़वापन सा आ गया। लेकिन अहिल्या के प्यार, सब्र और मोहक स्वभाव ने सासू माँ का दिल जीत लिया।
उनकी सकारात्मकता गंगूबा को भी हैरान कर गई। उनके दो प्यारे प्यारे बच्चे हुए जिनका नाम था मुक्ताबाई और मालेराव होलकर। गुस्से वाले खांडेराव को भी उन्होंने अपने प्यार से न ही एक रिस्पॉन्सिबल फादर बना दिया, अपितु पूरे मालवा साम्राज्य के प्रति जागरूकता भी जगाई। दरबार में आए कई केस वो दोनों अपने प्यार सूझबूझ से मिलकर सुलझा लिया करते थे। So now we all can see the power of a woman, कि कैसे उसने प्यार से, जो हम बुआ जी हमें सिखा रहे हैं रोज, जो प्यार का टूल है, कैसे हमें वो उसके साथ रहना है। Chapter number 4. तो चैप्टर नंबर 2 के बाद विल गो टू चैप्टर नंबर 3। Yes, Buaji, you can just conclude till the time I'm just sharing. असलो कहंदे ना कि गुरबाणी विच कहा जाता है, सो क्यों मंदा आखिए जिस जमे राजा। A very beautiful pankti. So you can see how this woman as a warrior go to the fourth story. Yes, Buaji, we are going on the third story. So there was some little technical, and now it is Chapter number 3. Demise, Vacuum and New Beginning. अहिल्या की शादी को 12 साल ही हुए थे सिर्फ कि 1754 में कुंभेर की लड़ाई में खांडेराव होलकर शहीद हो गए। अहिल्या इतनी टूट गई थी कि उसने सती होने का फैसला कर लिया, पर मल्हार राव होलकर उस वक्त पिता बन उसके साथ खड़े रहे। उनके शब्द कुछ इस प्रकार थे, बेटी, मेरा बेटा खंडेराव, जिसको मैंने इस आशा में पाल पोस के बड़ा किया है कि वो मेरे उत्तराधिकारी होगा, मालवा की शान बनेगा, अब अगर मेरी बेटी तुम भी सती हो गई तो ये बूढ़ा मल्हार तो टूट जाएगा, आंसुओं के सैलाब में डूब जाएगा। क्या तुम मुझे बेसहारा छोड़कर चली जाओगी? फिर भी अगर तुम जाना ही चाहती हो तो मैं मल्हार राव तुमसे पहले जाऊंगी। ये सुन अहिल्या ने अपना फैसला बदल लिया और अपना सारा ध्यान मालवा की सेवा में लगा दिया। वो आम जनता के लिए अहिल्या मां हो गई। उनके मन में सभी के लिए इतनी करुणा थी कि जात पात अमीर गरीब उनके लिए सभी समान थे। एक बार की बात है कि मालवा डाकुओं से भयभीत था, कांप रहा था। यशवंतराव, जो कि एक साधारण इंसान थे, उन्होंने अहिल्या की मदद की और मालवा को डाकुओं से मुक्त करवा दिया। उनकी ये दूरदर्शिता ने यशवंतराव में राजसी गुण देखे। बहुत विरोध हुए, पर उन्होंने अपनी इकलौती सुपुत्री का विवाह यशवंतराव से कराने का फैसला ले लिया। अहिल्या की आत्मीयता और करुणा ने डाकुओं का हृदय परिवर्तन तो किया ही, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी से कांप रहे भारत के खिलाफ डाकुओं ने अहिल्या मां का पूरा साथ भी दिया। इसी तरह उतार चढ़ाव में समय बीत रहा था कि गौतमाबाई होलकर की मृत्यु के कुछ ही समय बाद मल्हार राव और पुत्र मालेराव का भी देहांत हो गया, किंतु अहिल्याबाई टूटी नहीं। साम्राज्य के प्रति उनका विश्वास, वफादारी की बागडोर ने उन्होंने अपने हाथ में ले ली। वो लोगों के दिलों में राज करने लगी। this is what a power of woman. So now let's go to chapter number 4. Social reforms and work of Queen. अहिल्याबाई होलकर दिसंबर 11, 1767 को मालवा की महारानी बन गई। वो सब लोग भी उनसे सहमत थे जो पहले विरोध कर रहे थे। वो एक बेबाक रानी, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ और लोगों के दिलों को समझने वाली रानी थी। उन्होंने लोगों के दिलों को बखूबी जीत लिया। वो जब जहां जिसको जैसे जरूरत होती थी खड़ी रहती थी, सच का साथ देती थी,
इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी चुनौती का सामना कर जाती थी। उनका विजन बहुत ही क्लियर और स्ट्रॉन्ग था। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने औरतों की कारीगरी और निपुणता देख महेश्वरी साड़ीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री का नया रोजगार दिया। उन्होंने सती प्रथा को अबॉलिश किया। वुमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज और डाइवोर्स्ड एंड विडोड वुमेन कैन अडॉप्ट चिल्ड्रन ऐसे लॉज भी बनाए। काशी में मुगल्स द्वारा डिस्ट्रॉय किए शिव टेम्पल का रिस्टोरेशन करवाया। आम जनता के लिए कुएं खुदवाए, सराय बनवाई और आराम घर भी बनवाए। उन्होंने एक निष्पक्ष और न्याय पसंद जुडिशियल सिस्टम भी बनाया। उन्होंने अपने राज्य के हर इन्वेडर्स से बचाया। वो निडरता और तलवारबाजी देखकर दुश्मन भयभीत हो जाते थे। वो तलवारबाजी में बहुत ही निपुण थी। जॉन की, जो कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उन्होंने अहिल्याबाई होलकर को एक फिलोसफर क्वीन की उपाधि से नवाजा है। और वो इस बात से इतना एविडेंट होता है कि मराठा पेशवा भी अंग्रेजों के इरादे समझने में नाकाम हो गए थे। तब वो महारानी अहिल्याबाई होलकर ही थी जिन्होंने साम्राज्य को इस खतरे से अवगत कराया था। महेश्वर मालवा के कैपिटल बना और आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, म्यूजिक को महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बहुत इंपॉर्टेंस दी और राज्य के द्वार आर्टिस्ट के लिए खुल गए। ये था हमारा चैप्टर नंबर 5, जहाँ पे हमने देखा कैसे अहिल्याबाई ने कितना वुमेन्स के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है। सो लेट्स ऑल गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर 5, रूल एंड एंड ऑफ द चैप्टर। अहिल्याबाई होलकर का कार्यकाल 1767 में शुरू हुआ और लगभग 30 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। एक शासक के रूप में वह अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और मजबूत नेतृत्व के लिए जानी जाती थी। अहिल्याबाई होलकर वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थी। अपनी न्यायपूर्ण और प्रसिद्ध प्रशासन के लिए जाने वाली एक उदार शासक और कला, संस्कृति और सार्वजनिक कार्यों का संरक्षण करने के लिए उन्हें याद किया जाता है। 13 अगस्त 1795 को 70 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। अ वुमन ऑफ मॉडर्न टाइम, अहिल्याबाई को सुनहरे युग की तरह मराठा हिस्ट्री में याद किया जाएगा। एनी बेसेंट कुछ लिखती हैं इस प्रकार: हिंदू मुसलमान सब एक समान उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगा करते थे। तो कहते ना, अच्छे लोगों की सबको जरूरत है। सो नाउ विल गो टू द कंक्लूजन पार्ट। थ्री, डिमाइस। Yeah. Conclusion. Despite being a queen from 1767 to 1795, उनकी स्टोरी टाइमलेस है। वो हर उम्र के लोगों को इंस्पायर और प्रभावित करती है। बच्चे, बड़े, औरतें सबको इतना भाती हैं क्योंकि उनके चरित्र, उनकी कार्यशैली, उनके स्वभाव से इतनी सारी इंस्पिरेशन ली जा सकती है। महिला सशक्तिकरण की तो वो एक मिसाल है। उन्होंने पुरुषवादी समाज में औरतों को वो स्थान दिलवाया जिनकी वो हकदार हैं। उनका मन एकदम साफ था। राग, द्वेष किसी के लिए जगह नहीं थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो जरूर इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है। विकिपीडिया पे बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है, सीरीज भी अवेलेबल है। तो जितना हमसे बन सका हमने आपको प्रोवाइड किया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू जीवन जाट टीम एंड ह्यूमन एम्पावरमेंट टीम कि ये बहुत ही प्यारी, उन्होंने जब मुझे सुनाया मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, हमें दिखाना चाहिए। जैसे साइकोलॉजी में भी हमें यही बोलते हैं कि सेल्फ डिस्क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम दूसरों की लाइफ से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं ना, तो वो हमें जागृति देता है। सो इवन आई गॉट इंस्पायर्ड व्हेन आई हर्ड अबाउट दिस Ahilya by Holkar from Deepika Oberoi, and we decided, nahi, let's show to our audience too.
So now with this, I would like to conclude my today's series with a beautiful poem written by Deepika and video made by Amritpal Kaur ji. So ये आज सबको जगाएगी. It's a very touching words. So बुआ जी आवाज आ रही है, जरा मुझे बता दो. मैं हाँ हाँ जी, नारी मैं शक्ति की मिसाल हूँ, मैं जननी हूँ, जीवन हूँ, सशक्त हूँ, साकार भी हूँ, वात्सल्य, प्रेम, करुणा, सब्र. एक सेकंड. नारी हूँ मैं, it's breaking. नारी हूँ मैं, हाँ नारी हूँ मैं, शक्ति की मिसाल हूँ. ब्रेक करिए. मैं एक मिनट दोबारा देखती. मैंने साउंड चालू किया ना. हाँ जी, साउंड चालू है. ओके, जस्ट शो मी थम्स अप बुआ जी अगर आपको लग रहा है आवाज आ रही है. ठीक है. नारी हूँ मैं, नारी हूँ मैं, हाँ नारी हूँ मैं, शक्ति की मिसाल हूँ मैं, जननी हूँ, जीवन हूँ, सशक्त हूँ, साकार भी हूँ, वात्सल्य, प्रेम, करुणा, सब्र, निस्वार्थ अपनापन, कर्मठता और सहनशीलता, कई है मेरे गुण. घर आंगन त्याग, नया जीवन अपनाती हूँ, मन में लिए अनेकों उधेड़ बुन. बेटी, बहन, पत्नी, कर्मयोगिनी और माँ. बेटी, बहन, पत्नी, कर्मयोगिनी और माँ, हर रूप में तत्पर ढल जाती हूँ मैं. कम मत आंको मुझे, चलाने को देश भी चला लेती हूँ मैं. कम मत आंको मुझे, चलाने को देश भी चला लेती हूँ मैं. मेरी लड़ाई पुरुषों से नहीं, मेरी लड़ाई पुरुषों से नहीं, उन रीति रस्मों और विचारों से है, उन उसूलों से है, उन मिथ्याओं से है जो मुझ पर लागू किए जाते हैं. मैं कुछ और नहीं, मैं कुछ और नहीं, खुद को समझाकर अपनी बस एक नई पहचान बनाना चाहती हूँ. एक बात का थोड़ा अफसोस भी है, हाँ एक बात का थोड़ा अफसोस भी है, कल तक अपने गुणों से कईयों को संभाला है मैंने, गिरते हुए को उठाया है मैंने, टूटे रिश्ते को जोड़ा है मैंने, पर आज इक्वालिटी और फेमिनिज्म का राग गाते गाते कहीं ना कहीं खुद को ही भुलाया है मैंने. उन आदतों को अपनाया है जो इक्वालिटी नहीं, मेरी उलझनों को दर्शाते हैं. गौर कीजिए, उन आदतों को अपनाया है जो इक्वालिटी नहीं, मेरी उलझनों को दर्शाते हैं. मुझ में जीजा जैसी माँ भी है जिसने वीर शिवाजी को जन्मा है. मुझ में अहिल्या जैसी रानी भी है जिसने इतिहास को बदला है. मैं दुर्गा, काली और सीता भी हूँ, मैं दुर्गा, काली और सीता भी हूँ, महारानी जिंद कौर और माता भाग कौर भी हूँ. मेरे गुण मेरी ताकत है, मेरे गुण मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं बनने दूंगी. मैं आज की नारी हूँ, नारी को नहीं गिरने दूंगी. मैं आज की नारी हूँ, नारी को नहीं गिरने दूंगी. So I think we should give a big round of applause to my Jeevan Chat team. So I think if Deepika, are you here? Yes, I am here. Yeah, I would like you to be here to conclude this. कि आपने जो इतनी प्यारी कविता जीवन जांच के लिए, पूरे संसार के लिए, वुमेन्स के लिए लिखी है. तो दर्शी जी आप भी हो इधर? हाँ जी. हाँ जी. I want my here so that everybody should acknowledge कि how Jeevan Jat team is working day and night. Sorry, day. So yes, now Buaji, you can just acknowledge. Yes. So the two dynamic figures, excellent counselors of mine. I salute you both. I salute you, but I love you. Love you. I can see the passion and enthusiasm in you. This is the power. This is the empowerment where you bring a change into the society. Thank you so much. Thank you so much, Darshi and Deepika. Thank you so much. And Rimple, for you also, because you are there, we are there. So lovely, lovely. Thank you, Buaji. Excellent. Thank you, Buaji. Yes, Deepika ji, you want to say something? Thank you so much for the honor. I hope the audience like it and see how we are changing. कल का जो time था, earlier times we were empowered, but now वो जो empowerment पकड़ते पकड़ते कहीं ना कहीं अपनी power शायद lose कर दी है हमने. तो वो power को वापस से जगाना है और जो चीजें खो दी थी उनको शायद वापस लेकर आना है. तो हम तो कल भी ऊपर ही थे, आज शायद थोड़े थोड़े नीचे जा रहे हैं. इसलिए वापस से उठाकर उन चीजों को पकड़कर सिर्फ वुमेन को नहीं, मेन को साथ में लेके पूरे ह्यूमन एम्पावरमेंट को जगाना है.
Very, very good. Yes, Darshi, you want to say something to the audience for the very special Women Empowerment Day we are celebrating this month? आई थिंक हम लोगों ने सबने कह दिया, और एंडली दीपिका ने भी ये कह दिया कि इट्स नॉट ओनली वुमेन, इट्स इफ only when we hold the hand we complete, and that is human, and human empowerment will only gain something. Yes. बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, but then we are lacking of time. Instead of taking advantage of being a woman, we need to take the power of women and hold and be a human first. Then only we can be women. This is what I want to say. Excellent. Thank you. Thank you. Not least, I would like to thank Manish, as I was literally busy this series. I'm so sorry, Bhuaji. And Manish, you were really a strong pillar for me and for Jeevan Jaj. I really salute you कि आपके साथ ज्वाइन करके मुझे इतना चेंज आ रहा है मेरी फिजिकल हेल्थ में, मेंटली एंड इमोशनली। तो मैं जीवन जाच में बहुत सारा काम करी थी, बट फिजिकली ही ऑलवेज से कि नहीं रिम्पल, फिजिकली फिट रहेगी तो तू ग्रीन जोन में जीना है और दुनिया को हील करना है। तो वो मुझे छू गई उसकी बात कि नहीं, आई हैव टू टेक केयर फर्स्ट माई सेल्फ, आई हैव टू हील माई सेल्फ फिजिकली ऑल्सो, and then only I can empower mentally and emotionally and spiritually to the human all over the world. So thank you for this inspiration, Manish. That is why I never miss your class. So and for Jeevan Jat, especially thanks, आपने जो first time इतना दिया है बुआ जी के साथ। बुआ जी की तबीयत ठीक नहीं थे तो मनीष हमेशा साथ रहे। I was so busy. So really thanks for your inputs for Jeevan Jat and making this series wonderful. Thanks. Manish. Yes, Manish. Yes. So, final lines. It's not that I did something for Jeevan Jaj. मुझे सीखने ज़्यादा मिला from Bua ji, from everyone. The questions that were there, the dedication of all the people. I believe Jeevan Jaj is not just we. It is like all the people who attended. Because of them, these sessions are happening. So thank you all for joining. I hope आप कल tomorrow there will be question answer session. जो भी आपको सवाल है आप कल पूछ सकते हैं. There's an open forum which is not recorded. You can ask personal questions. Also, hats off to Rimple, Bhuaji, Deepika, Darshi, and all at Jeevan Jaj. It's a wonderful feeling to be here. It's my honor and pleasure, and whatever I've learned here, I've shared here. Thank you for the opportunity also to share this knowledge to the world, because we all need this, because we have forgotten that we are humans. We are like, हम भूल गए हैं कि हम इंसान भी हैं, लेकिन इंसानियत हमारे अंदर भी है। एंड बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब हम ये सब बातें सुनते हैं, आपसे जुड़ते हैं। मेरा रिक्वेस्ट सबसे यही है कि लेट्स नॉट स्टॉप हियर, let's keep working on ourselves day in and day out, because we all are work in progress, and let's all shine to become the best version of ourselves, because we are meant to shine. We all are meant to shine. We all are equals, men, women. This all divide we have created, let's इसको खत्म करते हैं. Let's rise above the gender differences. Let's rise above the religion. Let's rise above everything, because we are here for not, ये तो हमें थप्पा दे दिया गया that I am a Hindu, you are a Sikh, he is a Muslim, he is a Christian, he is a man, he is a woman, he is this that, ये businessman है, ये servant है, ये employee है, ये boss है. These are all designations that given to us. Above all, we are that human. That human क्या होता है? That we are all one. We are all interconnected at an invisible level. That आज we are all बोलते हैं ना, we live in an interdependent reality. आज मेरे बिना आप कुछ नहीं, आपके बिना मैं कुछ नहीं. When we understand that, all the differences like सब dissolve हो जाते हैं. जैसे नमक पानी में कैसे dissolve हो जाता है, वैसे अब सब differences dissolve हो जाएंगे, and we become that one. That हमने जो आज सीखा about awareness, that self awareness, it all boils down to that. Yeah. So can I end with a song, a beautiful song, an inspirational song? Everybody wants to listen to the song. Are we ahead of time, Dimple? Yes, What do you yes, think? yes. मनीषी, अभी चलो, आपने this बोला ना song, कि सॉरी, आपने yeah. अभी बोला ना कि आप सुबह उठ के ये बोलो कि आई एम परफेक्ट इन एनी वे, या इज इट ट्रू? आई मीन अपने आप को बोलो कि आई एम Who's this? परफेक्ट. दिस इज Who बबली. is this? Sorry, बबली जी. करके देखिए. मैं बोलूंगा रसगुल्ले का स्वाद सुनने से नहीं आता, खाने से आता नहीं, है ना. आप करके देखिए कुछ दिन के लिए. वो सारे कहने कितनी आकड़ आ गई बबली विच. सॉरी, वो बोले कि हिंदी कितनी बोलिए, आकड़ आ गई इसके Can अंदर. can I reply on this if you allow me, Manish? Yes, Darshi. Always. So हमें लगता है, हम कहते हैं ना कि हमें परमात्मा ने बनाया है,
आप बताइए, परमात्मा कुछ इम्परफेक्ट बना सकता है? Nothing. Yes, Babli He ji. always made a perfect thing. Absolutely, absolutely. We were born perfect, we became imperfect. Now the realization should be that we are perfect. It's like going back to the source. It's like going back to the source from where we came. Yes. So this is a song by a Pakistani singer, Dr. Rida Khan. इसमें 3 पार्ट है, इस गाने के 3 पार्ट है, 5 मिनट चलेगा, ध्यान से सुनिएगा. बहुत सारे मैसेजेस है इसमें जो हमने सीखा लास्ट 5 दिन में, सारे सबका एक समरी हो जाएगा, एक तरह से ब्यूटीफुल समरी. बहुत मजा आएगा, उसकी बातें सुनिएगा. शी इज माय फेवरेट सिंगर, वन ऑफ माय फेवरेट्स इन फैक्ट, एंड हियर शी गोस. सुनना, अभी जो है ना, हम जो है ना सारी जो लो फीलिंग्स हैं इनको दूर भगाएंगे ऐसे, और हम बहुत हाई फील करेंगे, अच्छे वाला. उठ के बैठो, चलो शाबाश. अच्छा चलो, परेशान हो, सुनो जरा. तुम्हारे लिए इस वक्त ये शायद बातें ऐसे ना जहाज की तरह उड़ जाओगे, इतनी जरूरी है. एक बात है कहनी, तुमको है ये सुननी, जो हो रहा है ना वो होना ही था, जो खो गया है ना, जो छूट रहा है ना, उसे जाने भी दो, वो कब तुम्हारा था. अब जो बात सीखनी है वो बस तुम्हारे हो, तुम्हारा रब तुम्हारा है, ना लोग तुम्हारे हैं, ना रोग तुम्हारे हैं, ये सब वक्ती तौर पर तुमको सताते हैं. अब क्या करोगे, मैं बताती हूँ. अब मुड़ के पीछे ना देखो, बस आगे बढ़ना है तुमको, जहाँ भी मुश्किल आ जाए, तुम अपने रब को बुला लेना, हिम्मत को अपनी बढ़ा लेना. प्रोमैक्स. दुनिया दीवानी है वेली, करती बेगानी है वेली, हर मुश्किल के साथ तो सिर्फ आसानी. यकीन रखना, तो क्यों ना हंस के जी ले हम, हर दिन को गले लगा ले हम, जब जीने की कदर आ जाए. फिर क्या करोगे, क्या करना है, खोए हुए खुद को पा लेना, तुम अपना आप बना लेना. मैंने क्या किया लाइफ में, किस तरह आगे बढ़ी, और तुमने क्या करना है, सुनो. अब जो बदला हूँ सबका बदला है, तुम भी ऐसे रुकना नहीं, ये जो गम है ये नहीं सब है, फिर मिलती है खुशियाँ भी. समझ आ रही है? तो चलो उठो, हार न मानो, मायूसी तो अच्छी नहीं, डरना नहीं है, साथ खुदा है, और कुछ तो है अपने भी, उनमें से एक मैं भी हूँ. बस डरना नहीं, कोई फिक्र नहीं, जो लिखा है वो होके रहेगा. हाँ बदलेंगी तकदीरें भी, इतना तो यकीन तुम्हें रखना होगा. तीसरी बात ये है कि तुम्हारी मिसाल बनेगी, चलते रहोगे तो, हिम्मत नहीं हारोगे तो, बिल्कुल यकीन है मुझे तुम पे. ठीक है ना. जो भी खो दिए सब कुछ, लगता है कभी कभार कि बस यार अब खत्म, यार अब जिंदगी को जो है ना डीएक्टिवेट कर दिया जाए. ऐसे कैसे, तो इसके बारे में कहना चाहूंगी कि खो जो दिया है सब कुछ था नहीं वो सब, बेहतर नहीं तो जल्द बेहतरी होगा सब. रुकना नहीं है, अभी तो बहुत आगे बढ़ना है.
हार को अपनी जीत में बदलना है। सबसे जो खास साथ है ना तुम्हारे लिए, वो तुम्हारा अपना है। तो फिर तो थाम लो हाथ अपना के छूटे ना अब ये कभी। और जो लोग हैं ना, जो तुम्हारी जो है माशाल्लाह से टांगे अड़ा रहे हैं अपनी तुम्हारी जिंदगी में अपनी, उनके बारे में हमारा क्या ख्याल है कि अपनी एनर्जी बचानी है यार। सोचने दो जो भी लोग सोचते हैं, लफ्जों को जाया होने देना ना कभी। क्योंकि तुम चट्टान हो, कमाल हो और बेमिसाल भी। क्या हो? मेरे साथ में बोलो, क्या बोलोगे आप? के मैं चट्टान हूँ, कमाल हूँ और बेमिसाल भी। देंगे सब तुम्हारी हर तरफ कभी तो मिसाल भी। तो क्या बोलना है हमें अपने आप को? व्हाट शुड वी से टू आवरसेल्फ? मैं क्या हूँ? 3 बातें क्या बोली उन्होंने? कौन बताएगा? एनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स कैन से। मैं क्या हूँ? मैं चट्टान हूँ, कमाल हूँ और बेमिसाल। बेमिसाल भी। Yes, such a beautiful thought to end the session. Such a lovely session. ब्यूटीफुल She's Dr. सॉन्ग। Rita Khan. You can check her out on YouTube. बहुत प्यारे गाने उनके। बॉलीवुड गाने भी गाती है, पाकिस्तानी गाने भी गाती है। Very nice. So thank you all for joining. Any questions, Boji, today or tomorrow? Right? Tomorrow we'll have open session. So tomorrow we Yes, have yes. open We can take the forum. questions tomorrow. And today I just want to end the session with a few announcements, audience, so that you will be aware what exactly I'm going to share is, first of all, about our Buaji. Ki already I announced, but once again it's a reminder ki we have started spiritual counseling in Delhi at Rosori Garden, Gurdwara. सो यू गाइस कैन टेक, जिसको भी कराना है, कोई रिलेटिव्स भी हैं आपके, ऑफलाइन अगर बुआ जी के साथ आप काउंसलिंग करना चाहते हो तो आप अपॉइंटमेंट लेके, नंबर्स दिए हुए हैं, फोटो खींच लो। थर्सडे और सैटरडे बुआ जी बैठते हैं वहाँ पे। सो वेन एवर शी इज नॉट अवेलेबल, द रिसेप्शनिस्ट गिव यू अपॉइंटमेंट फॉर द अदर डेज वेन एवर बुआ जी इज अवेलेबल। सो दिस इज सम वेरी प्राउड मोमेंट कि वहाँ पे गुरुद्वारे में जो भी है प्रोटोकॉल है, आपको 100 रुपीज देना है। एंड देन बुआ जी इज नॉट इन अ सिंगल पैनी, शी इज डूइंग सेल्फलेसली सर्विस टू मैनकाइंड। तो जो भी ऑफलाइन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, जिनको ऑनलाइन चाहिए फिर वो जीवन जांच के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। बुआ जी के साथ दीपिका, दर्शी, वी हैव मोर देन 30 काउंसलर्स, स्पेशलाइजेशन इन रिलेशनशिप, एंजाइटी, डिप्रेशन, ग्रीफ, ट्रोमा. So you can take this opportunity in Jeevan Jaj. And the second announcement which I'm going to do is ki, we have only 2 days left to close these admissions of Tiny Tots. On this Saturday, we are going to start with the Tiny Tots 3 to 8 years batch, learning their own language, Maboli. So we already got 130 admissions, but I request कि जो seriously है बस मैं उनको ही लूंगी। लोग तो बहुत ज्वाइन करते हैं, बट देन सडनली दे जस्ट ड्रॉप ऑफ। So I'm going to little be strict this time कि 3 attendance के बाद अगर बच्चा नहीं आ रहा without any reason, I'm going to remove them. I'm so sorry, I have to take this session. क्योंकि फ्री का मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी करें, क्योंकि टीचर्स टेक लॉट ऑफ पेन। कल भी मैं रात को मीटिंग करी थी, पूरे 120-130 स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई है, सबके उनके हम मांग रहे हैं, उनको ऐड कर रहे हैं, इतनी मेहनत है। एंड देन सडनली यू डोंट कम, दैट इज रियली वेरी सैड। तो फ्री का प्लीज ऐसे मत फायदा उठाओ। अल्टीमेटली भी बुआ जी वही करना, आपके कर्मास हैं। तो यस, पीपल से कि हम चार्ज करो, बट दैट डजंट मैटर। अपने अंदर से वो रिस्पेक्ट आनी चाहिए, जिसको नहीं आनी है उसको पैसे के साथ भी नहीं आनी है। सो आई जस्ट मैं आज लोकस ऑफ कंट्रोल ग्रुप में, बुआ जी आप भी ये सब डालो, एक स्पिरिचुअल काउंसलिंग का, एक हमारा जो टाइनी टॉस शुरू हो रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो भी बुआ जी को सुनते हैं, हमारा एनुअल डे आ रहा है। सो दिस टाइम वी आर कमिंग विद अ ब्यूटिफुल लेआउट, यहाँ पे लैंग्वेज का अलग होगा और इसका गुरबानी का अलग होगा और ह्यूमन एम्पावरमेंट का अलग होगा। सो दोज हु वांट टू रियली टेक पार्टिसिपेशन दे कैन डू इट, बिकॉज ऐसा नहीं कि मैं बड़ी हूँ, 60-70 ईयर्स के लोगों ने भी इतना एंजॉय किया था लास्ट टाइम कि आई डोंट नो पूनम इज देयर और नॉट। तो सबने इतना मजा किया था कि वी लर्नड अ लॉट। मजा से ऊपर होता है कि हम इतना फन करते हैं, इतना लर्न करते हैं।
सो मेरी काउंसलर्स अगेन आपने पूरी टीम देखी इस बारी, तो उन्होंने कुछ बहुत ही बड़े धमाके किए हैं स्क्रिप्ट में। सो जो एंजॉय करना चाहता है, जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, करो, नहीं तो ऑडियंस तो हो ही हो। सो मूवी 27 और 28 अप्रैल को हमारा एनुअल डे है, और उसके लिए हमारे अभी पार्टी मतलब प्रैक्टिस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द मिड ऑफ मार्च। सो लेट्स ऑल सो वंस अगेन थैंक यू भौजी, ये आप प्लीज डाल देना, मैं भी डाल दूंगी। तो आई एम श्योर ये वीडियो देख के अंदर से कुछ कुछ हो रहा है, और इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ग्रेट फन। बहुत सारे गाने सुनेंगे, ड्रामा मिलेगा, फिर भजन मिलेंगे, फिर आपको इसमें बहुत सारे आई मीन लाइक प्लेज मिलेंगे, सो कविताएं मिलेंगी, कवि सम्मेलन होगा। So there are so many things is going to come in this annual day, and people are thinking, ma'am, annual day online कैसे होता है? So from last 3 years we are doing online. पहले तो हमने 3 दिन किया, फिर सेकेंड टाइम 5 दिन किया, फिर लास्ट टाइम मैंने सिर्फ 2 दिन किया, बट अभी मैं सिर्फ 1 दिन ही कर रही हूँ, बिकॉज इट इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। कि हमने जनवरी से मीटिंग शुरू की है स्क्रिप्ट बनाने, अब जाके हमारी खत्म हुई है, अब प्रैक्टिस चालू होगी। दैट विल ऑल्सो टेक 30-40 days विद द स्टूडेंट्स, कि कैसे हम प्रैक्टिस देते हैं, कैसे ड्राई रन देते हैं, जैसे स्कूल्स में एनुअल डे होता है, वी ट्राई टू गिव दैट एनुअल डे ऑनलाइन, बिकॉज वी हैव ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट्स। तभी मैंने टाइम 5 o'clock रखा कि मेरे ऑस्ट्रेलिया, मेरे अमेरिका, मेरे कनाडा में कोई बच्चे को नाराज ना करूं। एवरीबडी दे ऑल एडजस्ट, सुबह भी उठते हैं अर्ली मॉर्निंग, ऑस्ट्रेलिया वाले लेट नाइट जागते हैं। सो टू मेक दिस इवेंट अ सक्सेसफुल एंड better than that, we learned a lot from here. So this was a few announcements, so please you can spread this message to boji, aap bhi please apne group mein dal dena ye तीनों। So thank you so much for listening। वागुरु जी का खालसा, वागुरु जी की फतेह।